Hello students, welcome to economics classes. Dear students, we have finished the chapter 2. In that case, we have seen that functions, limitations, importance of statistics in economics, and we have done all the MCQ. So today I am going to start chapter 3rd. Under chapter 3rd, the name of topic is collection and organizing of data. Once again, this is very important. Under this point, statistical inquiry. It means a research conducted by statistical methods. अब बेटा statistical method क्या होता है? We have to collect the data. That means sources of collection of data. There are two sources: internal sources, external sources. Internal sources क्या बेटा? When data is collected from the organization's own report or record. अगर ऑर्गेनाइजेशंस का ओन रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट है, अपना रिकॉर्ड है, उसको इंटरनल बोलते हैं क्योंकि इट इज कलेक्टेड इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और एक्सटर्नल इट रेफर्स टू डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. यानी अगर आप डाटा कहीं आउटसाइड एजेंसी से कलेक्ट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स. अब बेटा एक्सटर्नल सोर्स के डाटा को कलेक्ट करने का दो मेथड है: प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या बेटा? प्राइमरी डाटा आर सच डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर. दैट मीन्स प्राइमरी डाटा आर सच डाटा विच आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टिगेटर्स. और सेकेंडरी डाटा इट इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, रादर ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस. दैट मीन्स secondary data are such data which are collected by one and use it by others. तो बेटा इसमें क्या हो गया? प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल इन नेचर, सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल इन नेचर. तो बेटा इसमें एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है: व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. तो बेटा मैं आपको मीनिंग समझा दे रहा हूं, तो इसका डिफरेंस बिटवीन आप बना के खुद लिखोगे. कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स मोर time, money and efforts. Collection of secondary data requires less time, money and efforts. मतलब long time, small time. Primary data are more reliable. Why more reliable? Because it is collected directly by the investigator. And secondary data are less reliable because it is collected by one and used it by others. And in case of primary data, no precaution is required. In case of secondary data, more precaution is required. So dear students, hopefully you must have understood what is difference between primary data and secondary data. So beta, since according to the latest CBSE, it is coming in term 1, so we would focus on the MCQ. What is internal sources? What is external sources? What is primary data? What is secondary data? What are the difference between primary data and secondary data? Now dear students, we have the methods of collecting primary data. How primary data are collected? तो first method है बेटा direct personal interview. Under this method, investigator collects data by having direct contact. That means under this method, investigators go to the place of person. And data, they are direct personal interview. That means you are directly interacting with him to collect the data. But this method is applicable only when area of investigation is limited, because it will take so much time. So area of investigation is limited. तो बेटा MCQ में क्वेश्चन आ सकता है limited area. That means suitability. This method is suitable only when area of investigation is limited. Now dear students, we have the merits and demerits of this method. Merit: original in nature, more reliable, more accurate, more uniform. बेटा मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया. You can take the help of the book while writing the merits. Demerits: not suitable for wide areas, it is expensive, time consuming, require trained personnel. Because data is collected by visiting to each and every house. और second method बेटा indirect oral investigation.
investigator approach third party, that is never. It is suitable when area of investigation is large, when information is secrets. अब बेटा indirect oral investigation तब लगता है when it is not possible to contact directly with the persons, और हम उस लोगों को अप्रोच करते हैं जिसके पास मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का इंफॉर्मेशन है. मेरिट्स बेटा वाइड कवरेज, सेव्स लेबर टाइम एंड मनी, फ्री फ्रॉम बाइस, और डिमेरिट्स बेटा लेस करेक्ट एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड. पार्शलिटी ऑफ विटनेस, अब मैं जिससे डाटा कलेक्ट कर रहा हूं हो सकता है मेरे रिलेशन उसके रिलेशन ठीक नहीं हो, तो मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन वो दे सकता है. नो यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू विल राइट डाउन the two methods of collecting primary data: direct oral investigation and indirect. First method was direct personal interview, and second was indirect oral investigation, and the other three methods we will discuss in the next video. Thank you.